What you're about to watch is our discussion on Anand. Anand Hindi cinema की one of the most loved films में से एक है, and rightly so. For somebody like me who did not watch Anand while growing up, watching it now was genuinely something I will treasure for the rest of my life. This discussion was full of warmth. We discussed about the film's philosophy, we discussed about the characters, and most importantly, the songs. I genuinely hope you enjoy this conversation. Hello guys, welcome to the Abstract. My name is Sankalp, and here we are today discussing Anand by Rishikesh Mukherjee. Anybody who watched the film very recently or hadn't watched the film earlier and जिसने सेशन के लिए ही पहली बार फिल्म देखी, anybody here? I think the film is amazing, and the only thing the only thing which I didn't like about the film was the character. Any of the character didn't have flaws. That's the only thing I felt about. But the songs, the dialogues, everything was just amazing, and the shot taking and the risk Mr. Rishikesh Mukherjee took at that time to make such a lovely film was amazing. That's it. वो जो डायलॉग है, बाबू मोशा, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए. सो ये सुना बहुत था लेकिन कभी देखी नहीं थी, और देखने के बाद में आई थिंक सो एक मैंने थोड़ा मान के चलना पड़ता है कि इट्स द सेंट्रल कैरेक्टर is very loud. I mean, maybe he's overcompensating because he's dying. But overall, I loved the movie because of the dialogues and basically the songs. जो शुरुआत के scenes है, that time of Bombay, उस तरह के, it's dedicated to Bombay, dedicated to that city. And I have been to Bombay couple of times just to visit. I mean, वहाँ रही नहीं हूँ मैं, but उस तब का बॉम्बे इतना खुला, बिना भीड़ भाड़ वाला, वो शॉट्स देख के बहुत अच्छा लगा. लाइक इफ यू हैव टू इनवाइट अ पर्सन इनटू अ मूवी, इस तरह से शॉट्स लेना, इट्स ब्यूटीफुल. एंड द सॉन्ग्स ऑब्वियसली. Absolutely. I think the montage initially, and also उसके पहले भी dedication दिया था ना. I think this film is for Raj Kapoor and the city of Mumbai, if I'm not wrong. ऐसे लिखा था. So it just really, and then the film starting via that. So I think when something like a dedication like that comes in, मेरे लिए तो हो जाता है कि I start perceiving the film like it's for a city and not a specific person, and the person is just there to take the story forward, so to say. तो मेरा दिमाग तो चलना ऐसे शुरू हो जाता है. So the entire film I was just looking at Mumbai, कि यार मुंबई क्या था उस टाइम पे, and just looking at those small nooks and corners where maybe I have gone to like recently. It's nice to look at इतने साल पहले का. My dad was born that year when the film came out, so it's really long ago. So yeah, Anand, please. No, I'll talk about the film later. Just because you mentioned Rishikesh Mukherjee and Raj Kapoor were very good friends, and after Raj Kapoor passed away, he made Anand in honor of Raj Kapoor. Actually, I mean, there is the backstory. That is the main inspiration and the backstory for Anand. For people, I mean, it's a very commonly known story. I don't think that many people, like, mostly people know it, that he characterized mostly the journey and like the kind of the end Rajesh Khanna will meet on basis of Raj Kapoor, while he himself characterized his own on basis of Amitabh Bachchan. That is why Amitabh Bachchan is a Bengali character in the first place, because Rishikesh Mukherjee is Bengali. So that is the I mean, that is the inspiration which comes behind Anand. I mean, he was very shattered, or really kind of heartbroken after Raj Kapoor passed away. So that inspired him to write Anand. That's what I know. It came from that relationship he shared with Raj Kapoor. Exactly. It's a pure story of friendship, and somehow our griefs, our sorrows, I've seen this myself also, somehow brings out the best art, best form of art. It is not supposed to be that way, I guess. Even happiness can bring out art, but somehow the most, I mean, because maybe it resonates in a sort of poignancy and something. जैसे शिवाली ने बोला ना कि बहुत ओवर एंथुसियास्टिक कैरेक्टर था, कि काफी, तो वो पार्ट जब मैंने लास्ट टाइम रीवॉच करी थी तो मेरे को भी थोड़ा सा लगा था. बट देन व्हेन आई वॉच स्काई इज पिंक एंड व्हेन आई सॉ आयशा being so enthusiastic and so, she wanted to do everything, so I related with that because वो ज्यादा realistic था, ये थोड़ा fiction में था.
तो दोनों में जब ऐसे पैरेलल करके देखा तो समझ में आया कि नो, इफ यू हैव जस्ट काउंटेड डेज तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो तुम दिन गिन लो बैठ के, या तो फिर सेकेंड ऑप्शन ये है कि दैट यू लिव अप टू द योर लिमिट्स, मतलब जहां तक भी पहुंच जाओ. एंड डायलॉग्स यार, डायलॉग्स बहुत ही प्यारे हैं, एंड दैट्स लाइक ऋषिकेश मुखर्जी's forte basically, to write brilliant dialogue. So I think the co-writer or the dialogue writer is Gulzar, and that, just the name itself adds a lot of weight with it. And I think this might be one of his earlier works, but still you could sense what the man was capable of. मतलब जिन्होंने फर्स्ट टाइम अगर ऋषिकेश मुखर्जी का वर्क देखा होगा उनको थोड़ा लगेगा, लेकिन अगर बावर्ची देखी है या तो अभिमान देखा है या तो गोलमाल देखा है, मतलब उनके प्रीवियस वर्क देखे तो लगता है कि उनकी एक पैटर्न है, वो उसी पैटर्न से सारे कैरेक्टर्स दिखाते हैं और बताते हैं हर कैरेक्टर को. सो उनका मोस्टली ऐसे होता है कि कुछ तो लाइफ मोटोस रहते हैं उनके मूवीज में, और वो ऐसे ही मूवीज होते हैं, उनके कैरेक्टर ऐसे ही होते हैं कि हमको लगता है कि नहीं ये तो आइडियल है. तो बट ये उनका स्टाइल है डायरेक्टिंग का. Exactly. I think you said it very well, Aarti, actually. And a very important thing which you pointed out, that if someone has gone through the kind of work which Rishikesh Mukherjee has done, be it Golmaal, be it Anand or Abhiman, his plethora of work which we all know, which is famous for its music, which is famous for its stories, its dialogues, like Anshika mentioned. Okay, dialogues always have been a very forte of Rishikesh Mukherjee. So I think, yeah, and obviously a movie like Anand, it's a tragedy, and I don't think it leaves a deep impact just only because it's a tragedy. It leaves a deep impact because it tells the story so beautifully, and it somewhere or the other it connects like anyone and everyone at a certain level, and I mean, I have heard criticism from people that this is like hyper positivity and all that, blah blah blah. But I never felt so, because whatever he says, his character is portrayed in a little over enthusiastic manner, but that's what he's got, because you have to see the character from the character's point of view. Also, you have to up to a certain age, you have to analyze the film also from the time it was made, right? कुछ scenes देख के आज लग सकते हैं यार थोड़ा कच्चा editing है या थोड़ा cinematography वैसा है, but you have to consider it was made decades ago. So the kind of editing or the kind of coloring you see in a film standing in 2022 won't be the same what we see in the 70s, right? So standing from that point of perspective, a little, a few things might seem a little novice or might seem a little not, I would say not odd place. I'd say not very contemporary, but the story remains classic. The story remains contemporary even today. There are like the last line when Bachchan says ke Anand mara nahi, Anand marte nahi. Because it's the spirit of the film which it carries. Yeah, just to say कि जैसे मैंने कहा कि over enthusiastic character मुझे लगा, but as the film progresses and his health deteriorates, और वो एक सीन है जब अमिताभ बच्चन अंधेरे में अपनी डायरी लिख रहा है एंड आनंद अप्रोचेस हिम, और फिर वो जो डायलॉग है जिसमें वो कहता है कि मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे मेरी मौत दिखाई देती है, या आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्टली क्या बोलता है वो, बट वहां पे वो ध्यान में आता है कि वो ओवर एंथुसियास्टिक अभी तक था, ही वाज लिविंग हिज लाइफ, बट व्हेन ही इंटरेक्ट्स विद भास्कर एंड लुक्स एट हिम, he finds, I mean, वो कि people don't feel doomed when they are made to feel doomed. वो एक बात हो गई कि यानी I'm not feeling that I'm dying, but I'm looking at people and they are having this look on their faces and sorrow on their faces, and that makes me realize that yes, I am doomed and I'm going to die. Cancer is quite ugly. It's not so sanitized how it was. So, but yeah, the cancer is used as a metaphor for the inevitability of death and all. What does the awareness of knowing that you're going to die, like your expiry date, what does that really do to you? I think probably if I hadn't watched Anand and if I hadn't read Tuesdays with Mori, I also wouldn't have been probably able to answer this question. I mean, what better than that approach to take what Anand took or what Anand showed us as a film, that if you have a few days to live it to the fullest. Why, कि आगे के आने वाले जो 6 महीने में हर
600 बार जीने वाला हूँ उसका क्या? मैंने इंटरव्यू में पढ़ा कि ऋषिकेश मुखर्जी ने स्टार्टिंग में क्यों दिखाया कि डेथ ऑलरेडी आनंद नहीं है, मतलब पहले ही दिखा दिया हमको कि आनंद नहीं है। तो पहले तो ये था कि तब राज कपूर जी का तबीयत खराब था और वो और राज कपूर जी बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उनके पीछे ये मूवी बनी। लेकिन फिर तो राज कपूर जी की तबीयत ठीक हो गई थी। लेकिन ये आनंद का डेथ पहले इसलिए दिखाना चाहते थे कि हमारे दिमाग में, ऑडियंस में ये ना रहे कि ओ शायद आनंद बच जाए या तो कुछ मिरेकल हो जाए। जैसे कि कई लोग मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, कल हो ना हो और आनंद को बहुत कोरिलेट कर देते हैं। लेकिन कल हो ना हो में भी शाहरुख का जो एंड है, डेथ है, वो बाद में दिखाया है। तो भी एंड तक हमको क्या लगता है कि नहीं नहीं शाहरुख बच जाएगा, कुछ तो मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है मेन कैरेक्टर के लिए। तो लेकिन ये पहले ही ऋषिकेश मुखर्जी ने फर्स्ट सीन में ही बता दिया कि आनंद मर चुका है और ये बुक पब्लिश हो रही है और बाद में फ्लैशबैक स्टार्ट होगा। सो हमारे दिमाग में क्लियर है कि नहीं, डेथ तो कंफर्म है। जो आगे हमें लेसन्स लेने की वो कैसे जिया, वो हमारा फोकस उस पे रहे, ना कि हमारा फोकस ये शिफ्ट हो जाए। और एक डायलॉग है जब फर्स्ट टाइम बैनर्जी देखते हैं, अमिताभ बच्चन देखते हैं राजेश खन्ना को, और फिर वो बोलते हैं कि पहले आप बोल रहे थे और जाते जाते तू कर दिए ऐसे। तो वो बोला कि देखो मेरे पास टाइम कम है तो सब जल्दी जल्दी करना पड़ता है। सो मैं सोचती हूँ कि यही हमारे लाइफ के लिए है कि हम सोचते हैं हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास बहुत सारे सपने हैं, तो लेकिन हर एक छोटी चीज के लिए हम उसको पोस्टपोन करते जाते हैं। तो जैसे आपने पूछा कि अगर लिमिट दे दी गई तो मैं मेरे सपनों को प्रायोरिटाइज कर दूंगी और मैं हर काम क्विकली करूंगी। कि मेरे पास आज फ्रेंड्स है, मुझे कुछ दोस्त मिले, मुझे कोई अच्छे लगे तो मैं तुरंत बता दूंगी और उनसे शेयर भी कर दूंगी, नहीं सोचूंगी ऐसे, मतलब एज एग्जाम्पल। तो हम सब क्विक करने लगेंगे, इतना ही डिफरेंस हो सकता है और शायद पॉजिटिव भी ज्यादा हो जाए। Even though if I do know when my expiry date is, for that matter, I think it's funny enough because even if you don't have enough time, the people that are surrounded, you are surrounded with, have it. So the problem is that you want to spend your time with these people, but these people don't have enough time to give you right now. For the people who you are leaving behind, have to go through what you couldn't. You leave behind something that other people have to gather. I had a thought, like a more philosophical, thoda or deeper than a thought आया कि the world can't, the world and all the structures that are there around us, social structures that we have around us, they can't afford everyone to know their expiry dates. Like they won't function. The world won't function if everybody knew their expiry dates. So my point of reference for this is the film Kalakandi. Has anyone seen Kalakandi? That random film by Saif Ali Khan. So that film is very random, okay, but it's basically the guy knows he's going to die really, really soon, like 2 days after today or something like that. So he just goes berserk. He just, पूरे कालाकांडी नाम है फिल्म का यार, कांड करता है उल्टा पुल्टा। So having that as my point of reference and not Anand, I would like to say that if everybody in the world knew their expiry dates, the world won't be able to function because our social structures are made in a way that they help people, are based on averages first of all, and the average age is assumed when any of the structures are set up. For example, the school structure, for example, police, or even any other institutions that are there are set up on the basis of this average or this awareness or this assumption rather that people don't know their expiry date, probably 80, 85 or lesser at times. But if everybody knew the expiry date, they won't conform to these structures. Anand is not aspiring to fulfill his wishes or his dreams. He knows his dream is to marry that girl और कुछ और भी होगा उसके लाइफ में कि कुछ करना है और, बट एक्चुअली आनंद का पार्ट ये है कि वो छोटी छोटी खुशियां, उसको पता है मेरी लिमिटेशंस क्या है, अभी मेरे पास में 3-4 महीने हैं और उसकी लाइफ, उसकी हेल्थ दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तो हाँ, उसको लिमिटेशंस है, तो उस लिमिटेशंस के अंडर वो किस तरह से
एक्सपीरियंसेस ले सकता है छोटी छोटी चीजों में. लाइक देयर इज अ सीन ऑफ अ बुलक कार्ट. ही इज जब वो गाना चलता है कहीं दूर जब दिन ढल जाए, and there's a bullock cart on the beach, and he observes that, and he observes the balloons blowing away, and then he's ऐसे छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस बहुत जगह मेंशन किए हुए हैं सटली. आपके हिसाब से what was the cause of Bhaskar's anger and his nihilism? Bhaskar's character is shown in a way that he wants to do the service, but somehow by circumstances or by the way he comes up, he feels limited, you know, and he's put in such a time where there is so much illiteracy. I mean, a person comes to him and says that क्या बीमारी है, and then he's like ये टेस्ट करवा लो. He said यार 2 ट्यूशन और लिए शायद इसलिए गला का ये हो रहा है. एकदम शुरू में आता है ये सीन. And then Mr. Oshit Sen, he's also a producer and a director. He walks in and he says कुछ भी नहीं है, कैसे नहीं है ऐसा, अब मैं किसी और डॉक्टर के पास जाऊंगा अच्छे से ये दिखा रहे. So he wants to work for the betterment of the society, but is the society ready for that? I mean, the society just wants a doctor to give them 5 medicines, prescription भर के लिख के, so that kind of a thing. So he feels very captivated. What he wants to do, he cannot. He's frustrated. And then when he comes across this person, he finds. I mean, I think the characters were made like this. You know, like it's in quite a contrast. He is someone who has his life to live, but he still cannot live his life. And in sheer in the contrast to that, he finds Anand, who has just 6 months to live, and he is living every day. So to bring out Anand, they would require someone who is not similar, you know that kind of Anand. There's this very beautiful scene where Anand finishes the song kahin dur jab din dhal jaye, and then silently Bhaskar enters and asks, he says चुप चुप के मेरा गाना सुन रहे थे, तो he says कि कुछ उदास लगा ऐसा something. He says सुना कुछ उदास लगा, तो आनंद रिप्लाइज क्यों उदासी खूबसूरत नहीं हो सकती, तो मुशाई. तो you know, like, see, someone is going to dead and he is sad about it. He's always not very happy about it. He feels desolate or lonely at times. That is the tone the songs also bring in at places. But he's so hopeful that he finds beauty in that. You know, like that udasi also becomes khubsurat in, you know, like if you see from Anand's point of view, he just sees the udasi. When Bhaskar enters, he just sees the gloominess the song carries. But Anand says it's beautiful. I mean, there is a sunset at the end of the day, as the sunset brings the end of the day. But isn't the sunset one of the most beautiful things of the day? When somebody like Anand comes to his life, his perspective changes, and the way he looks at life is a little different because, and as you mentioned, like he is alone in this life. Like he has been alone ever since before Anand joined his life, and after that, when he makes a good friend in him, like after a really really long time, he has a good friend in Anand, and then when he like knows that this guy is not going to be there for a long time, that is another frustration that comes in. Like this was the time in my life when I actually wanted someone important to be with me, and that person is also not going to be able to live that long for me. So his frustration, I think, is with destiny for that matter. कि कितना भी अपने आप आसपास में चीजें चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ, but वो होने नहीं वाला. So I guess that was the frustration that came out of him very naturally also. I think. Yeah. But I love the way Amitabh Bachchan had this restraint in the entirety of his performance. That एक ठहराव, एक restraint था, एक sense of introspection था, reflection था, वो काफी ज़्यादा. It's not, मतलब from an acting standpoint, it was not something we see a lot in mainstream films. The restraint he had, but I think obviously it was sort of in contrast to Rajesh Khanna's character, so balance out हो गया एक तरीके से. But it was supposed to show a contrast, and in a sense, they both were extremes of a certain form of idealism. One on the side of nihilism, and other on the side of absolute optimism. But yeah, like पूरा spectrum दिखाना था एक तरीके से. And the third friend is somewhere in the middle, who's a realist
in that sense, has understood how to live life in the capitalist or opportunist standpoint, perception, whatever. Aarti, please. मतलब मुझे भी कभी कोई पूछे कि अमिताभ बच्चन की कौन सी मूवी दिमाग में आते लाइक फेवरेट्स में से या उनके अच्छे वर्क में, तो मुझे बाकी सब मूवी से ज्यादा आनंद और अभिमान पहले याद आते हैं ऑलवेज, क्योंकि राजेश खन्ना का जितना कैरेक्टर जरूरी था उतना ही उनका था। और मुझे जब मूवी स्टार्ट होती है तभी वो बोलते कि मुझे आनंद ऐसे टाइम में मिला था जब मैं फ्रस्ट्रेट था मेरे प्रोफेशन से। और आई थिंक मूवी में भी उनके पेरेंट्स शायद फादर मेडिकल प्रोफेशन में थे, तो क्योंकि कुक उनको आके बोलता है कि तुम्हारे पापा भी तो काम करते थे लाइक सेवा करते थे लेकिन ही यूज्ड टू ईट ऑन अ टाइम। सो पर मुझे क्या लगता है कि अगर हमारा मेडिकल प्रोफेशन का बैकग्राउंड हो, क्योंकि मैं ऐसे इस प्रोफेशन में हूँ तो मैं बता सकती हूँ कि जिनके पेरेंट्स होते हैं मेडिकल प्रोफेशन में, सो वो जो मतलब ये सब पहले से बचपन से देखे हुए होते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या है और लेग पॉइंट्स क्या है। और जैसे ही मैंने ये पर्सन देखे जो मतलब अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है कि एज अ पॉइंट हम सारे जो मेडिसिन प्रोफेशन में है वो एक पॉइंट पे ये फील करते ही है, फ्रस्ट्रेट होते ही है। जब हमें मुझे याद है कि हमें पोस्टिंग मिली थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सो हम लोग मॉर्निंग से नाइट तक जब काम करते थे और देखते थे कि नहीं इतने हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट आते हैं, टॉबैको मुंह में ही रहता है लाइक मतलब, और इतनी डिलीवरीज होती रहती है और खाने के लिए कुछ नहीं होता है। जैसे उसमें दिखाया था कि वो विलेज में जाता है जहाँ पे एक बच्चा मर रहा था फीवर की वजह से और एक जगह नए बच्चे का जन्म हो जाता है। सो मतलब कैसा है कि ये जो पॉइंट है वो जो फ्रस्ट्रेशन है वो हर मेडिकल प्रोफेशन के एक टाइम पे ऐसा रियलाइज होता है कि तुम घर जाके सोचते हो कि नहीं क्या कैसे चेंज कर सकते हैं। सो वो फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी आती है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इसका हमारे पास हम इससे क्या कर सकते हैं। सो अमिताभ बच्चन एक एग्जैक्ट पोर्ट्रेट था कि उनको ये पता नहीं था कि वो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसलिए वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट थे। मुझे कभी कभी ये भी पॉइंट लगता है कि राजेश खन्ना मुंबई आया उसके पीछे उनका ये था कि वो पहले से जानता था कि अमिताभ बच्चन और बैनर्जी मतलब दो फ्रेंड्स को, सो मतलब उसके पास वैसे भी टाइम कम था और वो बातें से उनकी कनेक्ट हो गया, या तो वो दिल्ली भी छोड़ना चाहता था एज उसकी गर्लफ्रेंड का मैरिज हो गया था, तो उनको ये भी था कि मैं जाऊंगा इन दोनों की लाइफ में। क्योंकि मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं जब सेकेंड टाइम देखी तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी मोटो हो सकता है। तो जब अमिताभ बच्चन मिलता है राजेश खन्ना के कैरेक्टर से, तो उसकी जो ये फ्रस्ट्रेशन है उसको भी थोड़ा अलग वे मिल जाता है। और वो ये भी बोलते हैं कि मतलब जब वो भगवान में नहीं मानते थे और जब वो बोलने लगे कि भगवान कुछ भी हो मतलब दुआ मांगो और इसकी एज बढ़ जाए, तो आसपास के सभी लोगों में ये शॉक हो ही जाते हैं, क्योंकि ऐसा मेडिकल प्रोफेशन में ये दो पर्सन हो जाते हैं, या तो एक्सट्रीम गॉड में मानने लगते हैं या तो एक्सट्रीम छोड़ देते हैं ट्रस्ट। क्योंकि मैंने मेरे आसपास लोग देखे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं इतना अच्छा लाइक क्रिएशन हम लोग इतना डिटेल पढ़ते हैं तो वो अलग तरह से भगवान को देखने लगते हैं, या तो कुछ ऐसा सोचते हैं कि सब हमारे हाथ में है, सो एक अलग एटीट्यूड आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये हर जो दिखाया है मूवी में वो हर मेडिकल प्रोफेशन में हर पर्सन वो फेस से जाता है और वो हर कोई पर्सन उसको अलग तरह से कोप अप करता है। जैसे उनका फ्रेंड होता है तो वो बोलता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर मैं दूध बेच रहा हूँ तो इसमें पानी डाल के बेचता, तो लेकिन वो उसको भी एक पॉजिटिव तरह से यूज कर रहा था बिजनेस ट्रिक में भी, कि जो जिसके पास पैसे उनसे ज्यादा पैसे लेके वो हेल्प भी कर रहा था। कुछ लोग ऐसे होते कि जो प्योर बिजनेस कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे होते कि जो प्योर लाइक सर्व ही कर रहे हैं सोसाइटी को, लेकिन वो एक हो ही जाता है कि वो लोग फ्रस्ट्रेट होते ही है। मतलब मैं ऐसे बहुत लोगों से मिली हूँ तो आई कैन रिलेट। आई थिंक जो भी आपको whatever narrative you feed yourself that is helping you to like lead life, might as well go ahead with that. आपको businessman या फिर एक activism या किसी भी sense में आपको help हो रहा है, so I thank you Aarti for that medical perspective on this, because I think वो काफी बार छूट जाता है काफी लोगों के दिमाग से वो चीज। लेकिन मुझे और एक बात ये भी बतानी थी कि ये प्रोफेशन का निकला है कि जैसे एक आइडियलिज्म कर दिया है हमारी कंट्री में ना कि इस प्रोफेशन को कि एक्सपेक्ट कर ही लेते हैं ओवर
कि इन लोगों को रेस्ट नहीं करना चाहिए। कोविड का ड्यूटी चला था, मैंने तब 2 इयर्स में देखा कि बहुत डॉक्टर्स को रियलाइज हुआ कि नहीं, हमारे लिए कोई सोच नहीं रहा है, सो हमें ब्रेक लेना चाहिए। क्योंकि जैसे ओवर वर्क और ओवर ड्यूटी सब किए हैं, तो सबको पता चल रहा है कि एंड ऑफ द डे कितना भी ओवर वर्क करने से भी हमें ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि और आइडियली वर्क करो, लाइक इज इक्वल टू गॉड, और बहुत आइडियली प्रोफेशन किया जाता है। सो उसके बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी हो जाते हैं कि ऐसे एक सर्वे निकला है कि सारे डॉक्टर्स किसी का पर्सनल लाइफ खराब रहता है, या तो डिवोर्स्ड हो जाते हैं, या तो ऐसे रेट्स बढ़ गए हैं, तो मतलब मेंटली इफेक्ट होना। सो ये है कि हमारे प्रोफेशन को बहुत आइडियली दिखा देते हैं, सो मूवीज में भी ऐसे ही दिखा देते हैं। अब ये तो पहले की मूवी है, तो ऑल आइडियल्स दिखाए गए हैं। Yeah. I agree, and I think it's because you are fit into a certain box or some certain role ना कि आपको उसी में दिखा जाता है, तो you forget कि यार ये इंसान है, ये क्या बोलते हैं मेडिकल, ये जो भी उसने सूट्स पहने हैं या लाइक इन अ मेटाफोरिकल सेंस जो पहने हैं उसने, उसके अलावा पीछे का इंसान भी है. So yeah, thank you for sharing that, Aarti. Before moving to Shefali, I also had a point about, I think that it's 1971 when the film came out. So I think the first scene when the film starts, like when he starts narrating his own story and how he met Anand, तो उसको जो पूरा exposition दे रहा होता है वो, he starts from a chawl. He's walking through a chawl trying to help people and what not. So I think there's this political and social frustration also that's being channeled through his character, which actually is seen a lot more in Amitabh Bachchan films as the years go along. This angry young man, it's like quite a well-known, like a cultural phenomenon now. But I think it sort of was I haven't seen enough, but maybe it felt like the beginning of it all, like this political and social frustration. But also along with that, because there's a lot of economic disparity, economic disparity back then than today, because there was no liberalization also that had happened. So there a lot less than we opportunities or products or other things that we have today. But also this privileged man's guilt that he's carrying throughout his journey as well, जो शुरू में रहता है, which honestly I felt, which I think जो उदय ने भी शुरू में बोला था about the characters being too flat, actually the story being too flat because the characters felt too pure at times. I also felt the same thing कि यार, you know, his initial social political frustration, either the fact that he himself felt he can't control everything, his lack of control over so many things was what was causing him frustration, now had shifted to this one specific personal story, and the only way out or the only way to heal himself was getting this chick or getting this girl. I meant it in that sense, getting this girl. It became about that, and his this frustration initially जो एक macro level पे था वो गायब हो गया, and I think it's a very writing thing that they didn't maybe just one monologue, maybe if you could have put out, yaar dekho sab mar rahe hain, something, I don't know. I think every character was a symbol or something or the other, and like so us sense mein dekha jaye to there's a lot of clarity that they're providing, because they're not going in for character development of every character in that sense when you're going I think so character arc जो था वो भास्कर का ही था इसमें. Anand was the same throughout. So were the other characters, but I think so Bhaskar Banerjee, Dr. Bhaskar Banerjee, जिस तरह से शुरुआत हुई उसकी, like I have been around doctors, my dad is doctor and I myself have, मैं खुद ही पेशेंट हूँ, तो मैं डॉक्टर्स के अराउंड बहुत रही हूँ. तो डॉक्टर्स जब किसी को देखते हैं, they don't look at him or her as a human being, उनको पेशेंट दिखता है. उनको एक वो जैसे मुन्ना भाई में भी बोलेंगे कि बीमार एक शरीर है एंड यू आर ट्रीटिंग हिम एंड यू आर ट्रीटिंग इट. तो ये परसेप्शन मैक्सिमम, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द प्रोफेशन हियर, बट ये परसेप्शन होता है मैक्सिमम डॉक्टर्स का, मे बी बिकॉज इन एंड आउट वो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं. और उसका परसेप्शन भास्कर का वही होता है कि जब वो एक्सप्लेन करता है आनंद को कि यू हैव lymphocytoma of your intestine and you are going to die, और उसका मतलब समझता नहीं है कि आपको, तो वो उसके सिम्टम्स गिना रहा है
but he doesn't know him as a person. और वो धीरे धीरे वो पेशेंट के अलावा भी उसके आगे वो पर्सन क्या है, वो ह्यूमन बीइंग क्या है, वो देखना की है ना, उसका कैरेक्टर बताता है कि वो समझने लगता है कि दिस इज नॉट ओनली अ पेशेंट या फिर जो एक सफर कर रहा है एंड ही इज गोइंग टू डाई, इज एक्चुअली अ ह्यूमन बीइंग विद एक्सपीरियंसेस विद फीलिंग्स एंड एवरीथिंग. तो ये जो कैरेक्टर आर्क भास्कर का है, फ्रॉम सीइंग अ पर्सन एज अ पेशेंट देन एक्चुअली सीइंग अ पर्सन and connecting with them, that's beautiful. I also want to talk about a couple of, from a writing standpoint, I think थोड़ी दो तीन चीजें जो obviously it's understandable they couldn't expand on that उस time पे, but they could have said so much more if it had to make a larger commentary. First, the capitalist friend, the business minded doctor, uska the monologue initially was great, cool, but the character had no build up to that, like no build up at all. So I wanted to know where he would have gone, his character would have gone, और वो कहीं भी नहीं गया. Both the female characters in the film, the both the love interest slash female characters in the film felt the same, honestly. खाली एक देवरानी क्या थी, एक देवरानी, सॉरी एक एक वो थी, भाभी थी और एक बहन थी. They felt the same. Like I'm just telling a few things that are coming to my mind, which just felt completely flat. And even the even the hypochondriac वाला जो शुरू में दिखाया था, that patient wants to know, या उसको चाहिए दवाइयाँ, मतलब that also reflects a certain absurdity, right, in this world. Let's talk about this. I heard that only a few days back this was announced that Anand का remake आ रहा है. And it's being made by the grandson of the producer, CP, not Ramesh CP, some other CP, but is being made by him. But it's in the writing stage. No director has been chosen, no cast has been chosen, but it's happening. So let's talk about this. What things would you want to have in the film that weren't there in this, or what are the things you would want that this film also has that the previous one did? ये पॉइंट पे लेके कि यू हैव लिमिटेड टाइम ऑफ लिविंग एंड देन द कैरेक्टर लिव्स हिज लाइफ, ये 2 बार और एक्सप्लोर हो चुका है. 10वीं दानिया में भी हुआ है और कल हो ना हो में भी हुआ है, बट डिफरेंट वे में. तो इसका रीमेक तो नहीं होना चाहिए, पर हाँ कुछ चेंजेस अगर करना चाहे तो जैसे तुमने कहा कि वो जो डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी है उसका कैरेक्टर ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते, कि वो दवाइयां देता है, इट्स लाइक क्या कहते हैं उसको, प्लेसिबोस. दे आर नॉट एक्चुअली मेडिसिन एंड द उसके जो पेशेंट्स है दे आर नॉट एक्चुअली सफरिंग, बट द पॉइंट वाज दैट इट इज इजियर टू पॉप पिल्स एंड गो एंड एक्सरसाइज. एंड उसके पीछे का एक कारण वो भी हो सकता है कि मेंटली फ्रस्ट्रेटेड है लोग, मेंटली दे आर नॉट वेल, एंड वो फिजिकली सोर्स ढूंढ रहा है कि भाई डॉक्टर के पास में जाएंगे, कुछ दवाई देंगे तो शायद मुझे ठीक लगने लगेगा. तो ये तो हम समझ सकते हैं, बट वो एक पॉइंट एक्सप्लोर कर सकते हैं. Again, I think when we see a movie from the Times perspective, also from the story's perspective, maybe because Rishikesh Mukherjee wanted to comment on the friendship, maybe he I mean I'm just like it's always a maybe. I mean every one of us will do a maybe only because we do not know what he thought and what he said, right? But I think that because he wanted to tell a story on friendship, he brought in Shubhita Sanyal to show that okay, like there can be a person who will be there to support Bhaskar after Anand passes away. There is a love interest or something, but he didn't want to like develop any particular strong storyline on that or bring any sort of romance out there, out and out romance out there. Instead, he makes the characters empathetic. He uses that character very beautifully in one scene to bring out Anand's past, which was still hidden, that he also had a love interest, a Bengali girlfriend or something. She mistakenly puts out the recording and वो आ जाता है ना बाहर, and Anand comes, अरे आप चला दिए ऐसे, like she asks him, and there's just a glimpse of his past. It's not even, and not that his past has gonna have any effect that much also, but he just uses that. Again, if you come to Lalita Pawar's character, the woman who plays the nurse, and she's such a fine actress, and she's done plethora of movies in her career, and she's given such a beautiful role, I think, like because
she has this kind of a stern headmistress kind of a, like a matron kind of a persona, but I mean, Anand is such a hinge that like he होता है ना कि पत्थर को पिघलाने वाली character someone has. So he even like says, I mean, when she also hears about Anand, someone who is portrayed so stern and strong as her, also like kind of melts down and feels sad, kind of feels mellowed. So I think female characters को इसीलिए नहीं stress किया गया because he didn't want it any the story to remain for Anand and about Anand. रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें जावेद अख्तर ने कहा था व्हेन डॉन वाज रीमेड, सो ही सेड दिस पॉइंट दैट sometimes we lack in मतलब जैसे अभी all the flaws we were discussing about Anand character development and not giving enough space to female characters, तो ये सारे flaws एक बार readdress हो जाते हैं, writers को scope मिलता है to rethink about those stories. And sometimes even that generation जो लोग भी जैसे Dawn में अगर देखा जाए तो anyone who was above 35 didn't like the new Dawn, but anyone who was who didn't see the first या फिर उसका nostalgia related नहीं है, cult से connection नहीं है, they like the new Dawn a lot. So in that perspective I think मूवी जो भी चीजें लैक कर रही थी, जो भी चीजें ऐसे कर रही थी, उसको एक राइटर को एक परसेप्शन मिल जाता है तो दे कैन रीराइट इट बेटर. Yes, I wanted to play the devil's advocate here कि remakes क्यों बनते हैं. It is never made for the original audience कि जिन्होंने already देखा है वो source material. They are always made to take it to the fresh audience जिन्होंने शायद वो source material नहीं देखा होगा. You can take the experience to them and all of that. But in the process of that जो discussion हम लोग कर रहे हैं कि sort of जो writing gaps हम लोग देख रहे हैं या फिर the discussions we are having and all of that, what I feel about that is that the best thing about Anand was its innocence. That if in doing the writing better or if in that process you take away or if imposing your understanding of today that you have of the world or political or whatever it might be, if you impose that on Anand, you take away its innocence. So this is one of the things which I'll be very keenly looking forward to. If they are remaking Anand, how are they retaining the innocence in especially our world, which is so fucked up, Like I hadn't finished like 20 minutes of the film. मैंने आज खत्म किया. So while finishing the film, I realized the last few scenes, the tension building was so nicely done from a filmmaking standpoint. Like the music and everything, I know क्या होने वाला है, but just I knew every goddamn moment of what's something going to called happen. surprising unavailability. Yeah. So I think वो पार्ट था ना कि मतलब I knew कि अमिताभ बच्चन कब आएगा, जब वो exact उस टाइम पे जब वो मर चुका होगा. I knew exactly कि but the one part I actually did not was very impressed by was the callback to the radio taping, so the taping that they had done, cassette, and how उसके callback कैसे किया था, like उसमें पूरा बीच में gap था, वो जाके अपने बाल बना रहा है, there's a lot of long pause and इसका point क्या है, but the point came back at the end and I was like, dude, this is impressive, like this is really smart, like if you're doing mainstream, do it right. And I think this was mainstream done right, like hitting the right chords, like hitting where it hurts. So I think उस sense में brilliant job in terms of the way the climax was staged. And like even though you know what's going to happen, but still building on that tension and ending the film where your protagonists are bawling their eyes out. I mean, that's an interesting way to end the story as well. I was actually hoping that they'll come back to present day and maybe they'll show his new family and uske bete ka naam Anand hai. I don't know. That could also be like a scene they have cut out of the film. हो सकता है कि वो हुआ होगा. But another aspect I forgot to mention, I think we all forgot to mention, was what Hrishikesh Mukherjee does in a lot of his films to show a secular India. Like I think he has done that quite a lot in his films. Here as well, there are prominent characters from all the main religions in India, and very respectfully, without any. यहाँ पे तो stereotype बिल्कुल भी नहीं था यार. Honestly speaking, I didn't find any stereotype over here. I was actually waiting कि कुछ तो निकलेगा, but absolutely. And just assuming
that we live together, that sense of tolerance, that sense of community, without any qualms or anything, just in a very matter of fact manner, I think really is a nice thing to show, at least, uh, because we realize that films are a representation of society, and kya bolte, they affect society as well. So if showing something like this can affect society in a nice manner, these things are a very matter of fact, we just accept it. So it just very nicely shown that kya bolte hai, the character of the nurse, for example, or the random friend he made from the theater, uh, just like, yeah, sure, like that's how it exists. And बहुत बहुत अच्छा लगा वो देख के, मेरे को जितना प्योरली दिखाया ना वो, and honestly could not find any stereotypes. Simplify किया था, but no stereotypes. Yeah, I just wanted to say a short thing because हम लोग उदासी की काफी बात कर रहे थे, तो गुलजार का ही एक कोट है कि he says जो खुशी होती है वो फुलझड़ी की तरह होती है, फटाक से खत्म हो जाती है, जो उदासी होती है वो अगरबत्ती की तरह होती है, लंबे समय तक महकती रहती है. And I like the example he has used the word, उसने दुख यूज नहीं किया, उसने उदासी यूज किया है, जो अर्नब भी शुरुआत में यूज कर रहा था. मेरे को लगा कि यार ये उदासी वर्ड का बहुत अलग मीनिंग हो जाता है, लाइक इन द सेंस के टेक्सचर जो कैरी करता है. और फिर जो अगरबत्ती का एग्जांपल उसने किया कि वो महकती रहती है, मतलब उससे खुशबू आती रहती है, इट एनरिचेस योर लाइफ. जो मंटो के भी फिल्म में था ना कि अब क्या बताऊं तुझसे मिलने पे क्या मिला, इरफाने गम हुआ मुझे दिल का पता मिला. So it was like that only, कि melancholy is the enrichment that comes to your life. So I was just thinking about that when you're talking about that. The number of films Rishikesh Mukherjee himself has remade. You know, out of the entire soundtrack of the soundtrack of Anand, 3 out of 4 songs are actually remade. So like he is not a person who would like defy seeing a remake being made. But the point which Aniket brings in, that to make a remake to serve the point of it. Rishikesh Mukherjee's film Chupke Chupke is a remake, then Khoobsurat is a remake, Bawarchi is a remake, some remakes hai. But what was the point of making them a remake? It was to serve, it was the need to serve it to a pan-Indian audience. When we are talking of a remake or a remix perspective, there have been things which has happened in that film also, but with a particular a vision in mind. Okay, this will go to the wider audience. The point is to remake Anand in अगर same story बस same सब कुछ same रख कर same बना दिया तो उसमें कुछ फायदा नहीं रहेगा. If they bring a modern perspective, okay, like they bring in the added tensions which COVID actually gave us for the past 2 years. Everyone have been in some way or the other have been tensed at one point of the year. क्या होगा पता नहीं. So if they bring some certain narrations and they take the storyline, so that can serve as a point of a good remake. जब इनको सिंगर चूज करना था, मैं सॉन्ग्स पे जाऊंगी क्योंकि मेरे लिए आनंद सॉन्ग्स ज्यादा स्पेशल है, मोर देन डायलॉग ऑल्सो. क्योंकि मुकेश जी का आवाज चूज किया गया रादर देन उस टाइम पे किशोर कुमार वो सब फेमस थे वॉइस के लिए, तो वो भी एक था कि उनकी जो वॉइस है वो सब गानों पे एकदम सूट हुई है हर एक इमोशन के साथ. फेबल्स ऑफ फिल्म जो पेज है उस पे एक पोस्ट था आनंद का, तो मुझे लगता है कि जो कैरेक्टर डेवलपमेंट और जो मूवी का एसेंस था वो उस लिरिक्स में भी था. जैसे ही पहले ही दिखाया गया है कि आनंद जो सपनों से ज्यादा कनेक्टेड है. जैसे फर्स्ट सॉन्ग आता है एकदम हैप्पीली कि मैंने तेरे लिए 7 रंग के सपने चुने, सो दैट इज वेरी बिग गुड लिरिक्स. सो फिर मैंने जब उसकी पोस्ट देखी तब मुझे रियलाइज हुआ कि हर सॉन्ग में सपने के बारे में. फिर नेक्स्ट जब सॉन्ग आता है कहीं दूर जब दिन ढल जाए, उसमें आता है कि ये मेरे सपने यही तो है अपने, ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके साए. सो वो है कि मतलब वो अपने सपनों को जो वो पूरा नहीं कर पाता है उसको भी तब याद करता है. और फिर आता है कि जिंदगी कैसी है पहेली, उसमें एक लाइन आती है कि एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे. सो ये कि उसने जो हर गाने के साथ अपने सपनों को एक्सेप्ट कर लिया है कि मतलब मेरे सपने मेरे साथ चले जाएंगे. मुझे लगता है कि वो हर एक परफेक्ट टाइमिंग पे मूवी में आए हैं सॉन्ग्स, ऐसे ही नहीं रखे गए. मतलब हर उस कैरेक्टर के साथ सपनों का कितना इम्पोर्टेंस था और वो दूसरों के सपनों को कितना इम्पोर्टेंस दे रहा था. और फिर वो इतना दुखी था कि मैं वो सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा. वो बीच में फूल देखता है जो उसकी गर्लफ्रेंड के लिए वो लगता है वो कविता के उसमें, और वो सपनों सोचता है कि मेरे ये सपने सारे कभी खत्म नहीं होंगे. लेकिन जब नेक्स्ट मूवी में और एक गाना आता है तब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मेरे साथ ये मेरे सपने चले जाएंगे.